Lordship, it is a case claiming the reservation of OBC. Lordship, we were born in Uttar Pradesh. Thereafter, I married to a person in the Uttarakhand. Thereafter, I have applied for the post of LT grade in science subject. और लॉर्डशिप इन्होंने हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम था, फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। उसके बाद जब हम यहाँ हाई कोर्ट आए तब जाके काउंटर में ये इनका ऑब्जेक्शन आया है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन हमारा जो एप्लीकेशन में स्टेटस मैंडेट था वो था एज अनमैरिड। एंड लॉर्डशिप हमारे काउंटर एफिडेविट में हमने स्पेसिफिकली उसको रिप्लाई किया है कि वो जो हमने लॉर्डशिप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो हमने एक साइबर कैफे के थ्रू भरा था। वो एक ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। Yes, Lordship. But Lordship, that I have rectified at the time of document verification. I have submitted my marriage certificate as well as an affidavit to the effect that that was a mistake. That was neither deliberate and not intentional. And Lordship, even and Lordship, secondly, I have produced before this honorable court a judgment dated 17/8/2012. On the last date of hearing, this honorable court directed us to supply the order passed by the honorable Supreme Court against that order. आपने अनमैरिड लिखा था शुरू में? लॉर्डशिप, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हमारा अनमैरिड आया था। उसको लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमने वहाँ पे एफिडेविट प्लस अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ प्रोड्यूस करा था। एंड लॉर्डशिप द सेम हैज बीन annexed in our rejoinder affidavit. आपकी जात के कौन सी कास्ट है आपकी? Lordship Kashyap, we belong to OBC community regarding Kashyap. The Kashyap subcategory Kashyap that was duly Dhivar. Kashyap subcategory Dhivar. Lordship, this particular category was notified in the state of Uttar Pradesh as well as in the state of Uttarakhand. It is duly notified. And Lordship, I have passed on the earlier date. I have passed a judgment dated 17/8/2012, passed by this honorable court, whereby a similar case was held, and कौन सा केस? Lordship order dated 17/8/2012, Ajay Kumar versus the state of Uttarakhand. It's a bunch of petition. इसमें भी Lordship एक सिमिलर केस था, that of Jyotsna and Jyoti Bala. ये पर्टिकुलर केस भी लॉर्डशिप, इसमें भी ऐसे स्पेशल अपील हुई बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। देयर आफ्टर ज्योति का केस में अपील का ऑर्डर का दोनों यार डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे है, कास्ट सर्टिफिकेट पे नहीं है जजमेंट। But Lordship, the judgment that I have produced before this honorable court, that of 2012, it relates to that caste certificate. It says what will be the criteria for obtaining the caste certificate in the state of Uttarakhand. ज्योति बाला में डोमिसाइल का इशू। Yes, Lordship. But Lordship, thereafter, the judgment I am placing reliance upon, that of 2012. But इस judgment और इसमें क्या था दूसरी में ज्योत्सना में? मतलब ज्योत्सना में भी अभी आप रुकिए। हाँ, ज्योत्सना में क्या था? क्या है बोलो भी क्या है इसमें ये तो ज्योत्सना तो डोमिसाइल में था ये। Yes, Lordship.
Lordship, in दोनों judgment ज्योति ज्योत्सना में क्या है? Lordship, she was also the resident of Uttar Pradesh. Thereafter, she married to a person. She applied for a post in Uttarakhand. Even thereafter, she was, by this honorable court, she was entitled successful for grant of that domicile. And Lordship, by this judgment of that 2012, in a compliance of that, Lordship, a government order was issued on 2nd April 2013 by the state government. क्या हुआ विक्सुल था? आप बताइए। Lordship, kindly have the government order, Lordship. Or second, आपने हमें जजमेंट दिया, पहले जजमेंट बताइए। Lordship, judgment has been given by them. Lordship, these was judgment. क्या बोलते हो प्रभाकर? ये आपने साइड नहीं किया क्या ज्योत्सना? Lordship, these साइड are. किया ना? Lordship, yes, क्या Lordship. लिखा है इसका पैरा सुनो? You have cited it. उसमें तो ज्योति में तो मान लिया कि she was domicile of this place because she Lordship. married to a boy at Kasipur in the undivided UP. So they said this is domicile of here, therefore she would carry with the caste certificate as well, Yes, Lordship. There, which is not the case in the present yes, case. Lordship. In In our the case of Jyotsna, they said that she is not migrated because her father was Father was- allocated this category. Yes, Lordship. Father. But then they also said that permanent domicile of Uttarakhand by virtue of her marriage. ये भी लिखा? Yes, Lordship. Lordship, but in our case, we were duly granted the caste certificate. हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है लॉर्डशिप, जिसको इन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया है. बस इनका कहना ये है कि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसमें जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें हमारे हस्बैंड का नाम था, हमारे पिताजी का नाम नहीं मैं ये नहीं कह रहा. था. That they played it lordship in their counter. That's why we have not considered our OBC standard. काउंटर लिखा है इसमें? Yes, सलीके मैंने से? सबमिट मैंने Yes, सलीके Lordship. से लिखा है या Yes, इसमें Lordship. प्रेफरेंस दिया? नहीं मैंने सही सलीके से लिखा? जी। तो कुछ भी छाप दिया? किसी का उठा के छाप दिया? जैसे पहले वाला में देखा ना आपने? नहीं मैंने ठीक मतलब if I may be जस्ट होल्ड ऑन, permitted. मुझे देखो कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? It's at page number 7, paragraph number 7 of the counter affidavit. Now if I understand. And Lordship, thereafter, they relied upon a judgment named as Sunita Singh versus State of UP. In that case, the candidate was belonging to the Agrawal family. Thereafter, she married to a person of a scheduled caste community.
category and she claimed the benefit of reservation. In our case, we initially since our date of birth, we belong to the community that OBC, subcategory Kashyap, and thereafter we married to a person who also belongs to that category. And this particular category is duly notified in the state of Uttarakhand as well as its state of UP. And Lordship, as per the एक होता आर्गुमेंट, एक होता फाइन आर्गुमेंट, एक होता आर्गुमेंट, एक होता फाइन आर्गुमेंट. अभी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, apologies for that, Lordship. This एक था ना बहस करना, एक था ना बेइंतहा अच्छी बहस. ज्योत्सना में क्या कहा है और आपके केस में कैसे लग रहा है? ज्योत्सना में दो बातों पे डोमिसाइल मांगा, Yes, Lordship. पापा का अलॉटमेंट Yes, और Lordship. शादी. शादी. And आपका कहना है कि हमारी शादी है, yes, Lordship. इसलिए हम डोमिसाइल. लॉर्डशिप, हमारा कहना यह है, इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया इस जजमेंट के कंप्लाइंस पे. 1 अप्रैल 2013 का यस लॉर्डशिप. कास्ट सर्टिफिकेट जारी कास्ट किया. सर्टिफिकेट, उसमें बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट किन कंडीशंस पे दिया जाएगा और उसमें जो कंडीशंस दी है उसमें नहीं, ये नहीं लिखा उसमें. उसमें ये लिखा है Yes, नंबर Lordship. 4 में कि परमानेंट रेजिडेंट क्या होता है. नो लॉर्डशिप. पैरा 4 में लिखा है कि परमानेंट रेजिडेंट क्या होता है. यस और लॉर्डशिप. उसके लिए 2001 का अप्रैल 2001 का जो एक जियो है, कब का है वो 5/9/11 का 2001 का जियो. बट लॉर्डशिप काइंडली हैव द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इज गवर्नमेंट ऑर्डर. मे आई रीड लॉर्डशिप? नहीं, रुको अभी, आप सही नहीं बोल रहे. काइंडली हैव दिस दैट गवर्नमेंट ऑर्डर 2nd of April 2013. हाँ, तो दे रखा ना इसमें. वो कब का वो एक Lordship, जियो था 2001 20 नवंबर का. यस लॉर्डशिप. वो लिखा है इन्होंने इसके पैरा 4 में यस लॉर्डशिप. कि परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा. पहले उन्होंने लिखा कि कास्ट सर्टिफिकेट परमानेंट रेजिडेंट को दिया जाएगा, पैरा 3 में. यस लॉर्डशिप. वही है ना 2 अप्रैल 13 का. 2 अप्रैल. और फिर पैरा 4 में उन्होंने लिखा कि जो Who will belong? नवंबर 2001 20 नवंबर एक डेट है, उसमें जो परमानेंट रेजिडेंट है वही परमानेंट रेजिडेंट इस पर्पज के लिए. लेक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, उसके बाद लिखा अथवा और उसके बाद कुछ पॉइंट्स और दिए हैं. वही परमानेंट रेजिडेंट वही है. यस लॉर्डशिप. परमानेंट रेजिडेंट के लॉर्डशिप पॉइंट नंबर सब 5 में डेफिनेशन है. सो दैट डिफाइंस स्थायी निवासी. स्थायी निवासी कौन होंगे? लॉर्डशिप, देयर आर 7 सब कैटेगरीज and lordship we follow in the 5th one. Lordship is बिल्कुल सही आएगी. yes lordship. Lordship, kindly have the paragraph number 2nd firstly of this government order. Lordship, may I read lordship? पढ़ो. Lordship, the subject matter of this government order reads as राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्त के संबंध में आवश्यक निर्देश. इट रिलेट्स टू इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट. एंड लॉर्डशिप, सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस रीड्स एज अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों में आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत 23 मार्च 1994 तथा उसके पश्चात निर्गत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट पिछड़ी जातियां वर्गों के व्यक्तियों को ही अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा. दैट इज इंक्लूडेड एट एनेक्शन नंबर 2nd ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑर्डर. लॉर्डशिप, इट्स एट लॉर्डशिप काइंडली हैव दैट लिस्ट. इट्स एनेक्शन नंबर 2nd. पॉइंट नंबर 4, इट्स कहार कश्यप. एंड ऑन नेक्स्ट पेज पॉइंट नंबर 26, इट्स धीवर. It's only Dhivar. It's only Dhivar. No Kashyap Dhivar. But Lordship, as far as I know, that Lordship Kahar and Kashyap both are They similar. would have mentioned it in this because they have mentioned Kashyap Kahar. Lordship, if there is any dispute regarding this government order must have been challenged. And as far as I दीवर कहाँ है, क्या पढ़ रहा है? Lordship, Dhivar है next page में serial number 26 में. एंड लॉर्डशिप 1994 का जो एक्ट है हमारा फॉर दिस, उसमें भी ये दोनों के दोनों ड्यूली कैटेगराइज हैं. हम तो यही कह रहे हैं लॉर्डशिप कि हम जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ वी वर एट उत्तर प्रदेश, वी वर ड्यूली नोटिफाइड ओवर देयर. एंड देयर आफ्टर इन उत्तराखंड, व्हेन आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दिस एक्ट वाज अडॉप्टेड, वी वर आल्सो नोटिफाइड हियर आल्सो. एंड द जजमेंट्स दैट माय लर्नड फ्रेंड हैड रिलाइड, दैट all of three, none of them is the similar, that one is migrating from Uttar Pradesh to Uttarakhand, one is migrating from Punjab to Uttar Pradesh, that of Ranjana Kumari. In one, that Seema
one is migrating from महाराष्ट्र to राजस्थान. कोई एक ऐसा जजमेंट इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया जिसमें कोई एक उत्तर प्रदेश से कोई भी एक कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से आने का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई मैटेरियल नहीं है. इशू उत्तर प्रदेश नहीं है, इशू उत्तर प्रदेश ज्योति के केस में तो है. यस लॉर्डशिप. क्योंकि वो काशीपुर में थी. यस लॉर्डशिप. और उस समय मैरिड होकर काशीपुर आई थी मुरादाबाद से, और काशीपुर अनडिवाइडेड यूपी का पार्ट था. 1998 1998 उनका जो डेट रेलेवेंट डेट है वो 1998 1998. और फिर जब स्टेट बन गया वो यहीं रह रही थी. यस लॉर्डशिप. उन्होंने कहा तो यहीं की डोमिसाइल है. बट और इसके केस में हो गया ना आपका आर्गुमेंट. no lordship, there is some. But lordship, my specific point is this judgment of 2012 where that Jyoti Bala and Jyotsna both were relied upon. ये लॉर्डशिप ये ऐसे स्पेशल अपील इसमें हुई, वो खारिज हुई. इसमें क्या कहा लॉर्डशिप जिसके कंप्लायंस में ये 2013 का गवर्नमेंट ऑर्डर बना, 2012 का ये जो जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस तनुर अग्रवाल. आपने पैरा 18 और 19 बनाए, दोनों जो पैराग्राफ ज्योति और ज्योत्सना के जजमेंट. No lordship, there are lordship on the earlier date I have relied upon that two paragraphs 72 and 74. Earlier also I have read before this honorable court these paragraphs. पढ़ो. Lordship, para number 72, page number 40. In the light of the aforesaid, a person of Uttar Pradesh who belongs to a reserved category and who migrated from one part of Uttar Pradesh to the another part of Uttar Pradesh and enjoyed the privilege of that caste in the state of Uttar Pradesh, and who is staying for all practical purposes in the permanent capacity for a considerable period of time, will continue to enjoy the same privilege upon the creation of Uttarakhand, provided his caste is notified in the state of Uttarakhand. The said person could not be treated to be the original resident of Uttar Pradesh, and the state government of Uttarakhand could not treat this person as not an original resident of Uttarakhand, or reject his application on the ground that he originally belongs to the state of Uttar Pradesh. And lordship, इन्हीं सभी डायरेक्शंस के बाद ये गवर्नमेंट. ये तो ज्योत्सना वाला केस, ये तो ज्योति वाला केस. नो लॉर्डशिप, आफ्टर reading all the judgments from both the parties. 72 में ये कहा है कि अगर स्टेट में यूपी में था और वो हिस्सा आप उत्तराखंड में आ गया, उत्तराखंड में भी नोटिफाई है तो माना जाएगा. 2 मिनट. Yes. It does ये not. उसको तो गोरखपुर में थोड़ी माना जाएगा. Lordship, it reads as, may I read it again? Consequently, when the state of Uttarakhand is bifurcated and the state of Uttar Pradesh is bifurcated and the state of Uttarakhand is created from the composite of the state of Uttarakhand, the geographical limits of the entire state of Uttar Pradesh will not be taken into consideration in relation of the state of Uttarakhand. That is what. Yes, Lordship. But Lordship, even thereafter, if I may be wrong, this judgment was challenged before this divisional bench in the special appeal. That too was rejected. even thereafter, this judgment travelled to Honorable Supreme Court. Even thereafter, it was there also it was dismissed on merit. On Lordship, on 6th of January 2024. इस जजमेंट का पैरा पेज जो 42 है ना, Yes, Lordship. उसमें है वो वाला केस, ज्योत्सना वाला इससे निकला है. पैरा 74 बॉटम. Yes, Lordship. Once a caste is वो केस नहीं है आपका. आपका वो केस नहीं है. Lordship, मेरा ये कहना है, जिन पर्टिकुलर इससे पहले भी अभी देखो ना, अभी आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. जी. जो आपने पढ़ा ना ये 2012 का, वो केस नहीं है आपका. वो तो ये था कि काशीपुर में आगे यूपी था, या चलो हरिद्वार का कोई हिस्सा मान लो, मंगलौर का कोई. अब वो यूपी उत्तराखंड में आ गया और उत्तराखंड में भी नोटिफाई है, तो ये नहीं कह सकता है जो ओरिजिनल उत्तर प्रदेश का था. No, Lordship. Lordship, in Jyoti Bala, she was the resident of Muradabad, Uttar Pradesh. Thereafter, she came to Uttarakhand. Yes, Lord. She was married at Kasipur in the year 1998. Yes, Lord. कोर्ट ने कहा परमानेंट रेजिडेंट हो गई थी, But थाने Lordship, में थी, यहीं आके रह रही थी. yes, Lord. अब अगर वो काट के आपने उत्तराखंड में ले लिया तो वो यूपी की नहीं मानी जाएगी, वो यहाँ की मानी जाएगी. और यही इसमें भी कहा. Even I may be wrong, Lordship. But even after, Lordship, there is a government order standing before this honorable court of 2013. We duly fall within this, Lordship. चलो हो गया, अब हो गया ना. Lordship, पढ़ लिया kindly allow me to read two paragraphs of this government order. पढ़ लिया आपने, पैरा 5 Lordship, पढ़ लिया आपने. paragraph number 2 that states that what all the castes would be categorized and what are notified in the state of Uttarakhand as OBC. First thing,
and in that we have, though both the cases are notified, I have produced before this honorable court my caste certificate of Uttarakhand at the कश्यप धीवर तो नहीं है इसमें, है lordship, बता था खाली धीवर है. but lordship as per the lordship हमें caste certificate issue हुआ after due investigation, क्योंकि as far as I know, as far as I consulted from the petitioner and others also, there even in Uttarakhand and Uttar Pradesh, आपसे बातें छोड़ो आप लॉर्डशिप धीवर और कश्यप लगभग एक ही कम्युनिटी है, हम और आप नहीं कर सकते, बट लॉर्डशिप State board. हम और आप नहीं कर सकते, जो लिखा वैसे पढ़ा जाएगा. लॉर्डशिप काइंडली हैव द कास्ट सर्टिफिकेट at writ petition starting from 12 to 20. These are my caste certificates of OBC that reflects SS Kashyap, and lordship one that I Kashyap of अब आप बैठ जाओ, lordship one more. आसन ग्रहण करो. Lordship kindly allow me to submit for सुन लिया, आपको बहुत सुन लिया. lordship allow me to for 2 minutes on. Well, that it is pertinent to bring to the notice of this honorable court that the petitioner has not come with clean hands and there has been a concealment of fact, as the petitioner in an application form has shown her marital status to be unmarried and she has attached her OBC certificate in which the name of her husband is shown. OBC certificate was obtained by her in the name of her husband. This was her case. This is why we rejected. Now the second facet of the case, my lords, is when they filed a rejoinder. In their rejoinder, they mentioned that no, she has an OBC certificate in the state of Uttar Pradesh, which was under the name of Dhivar. The documents were placed by them subsequently in the rejoinder affidavit. So, my lords, there are two principles which my lords have to see in this matter. First, whether a caste can be migrated from one state to another, covers Jyoti Bala, Jyotsna, Mary Chandrasekhar, and other judgments that I'll give to my lords right now. The second is, can whether caste is obtained by birth or it can be changed by way of a marital status. Initial Singh, my lords, the first judgment that I had placed on record was of Sunita Singh, which she's saying that she was into an Agarwal family, got How do married. you distinguish Jyotsna? Jyotsna, Jyotsna, my lords. After Jyotsna, there is a matter of Ranjana Kumari that has come up before my lords. Ranjana Kumari ka jo maine last time judgment diya tha, that was a Supreme Court order. It has travelled up to the Supreme Court and the judgment was affirmed. But I am giving now the copy of the High Court's order, my lords, in which they have stated that Jyoti Bala, my lords. Here. Now this is the judgment where the principle is being laid, my lords. It's a division bench judgment of this honorable court in paragraph number 7, 8 and 9, my lords. In paragraph number 9, they have clearly distinguished that it is on the basis of a domicile certificate. In fact, the judgment which is produced by my friend here before my lords of Ajay Kumar, it only defines what would be defined under a definition of permanent resident. Domicile kya hoga, permanent resident kya hoga. I'll read, my lords, that judgment is very detailed. We have to read from para number 36 to 48 to understand this judgment, which was produced by my friends, which was not read before, my lords. My lords, this basically says that in a state, in a particular state, when we have to give them a caste, what is the nature, how do we determine the caste, my lords? We determine the caste by way of their permanent residence or their domicile certificate. And my another submission is that as a commission, I can't do it. They have not made state. I couldn't appreciate your first submission. Why are you on the second submission? My lords, I'm just finishing it. My lords. The first one is marital status, my lords. Yes. Yes, okay. I'll come back to that, my lords. My lords can kindly have the Sunita Singh judgment for marital status. My lords, the first issue is on the marital status, whether caste can be taken, is by birth or can be taken by So way they of... distinguish Jyoti Bala. They distinguish Jyoti Bala and Ranjana Ranjana Kumari. Kumari. Yes, my lords. What about Jyotsna? But Jyotsna has not been referred in this matter, but Jyotsna again, I'll read para 16 again for my lords in Jyotsna. Jyotsna, my submission is again on the basis of a domicile. That's Caste certificate मिलना है अगर उस area का वो domicile रहेंगे Right. तो. And they found her domicile of Uttarakhand in Yes, the case of Jyotsna on Yes, two ma'am. counts. Yes, ma'am. One, her father was allocated the Yes. cadre of Uttarakhand, number one. Number two, she married a boy who is a Even
even though Jyotsna has not been distinguished in this matter, my lords, but it's from this court which has travelled up to the Supreme Court. And in Sunita Singh matter, my lords, it says that caste is determined in paragraph number 5. It has categorically said that caste is determined by birth, which cannot be changed You are by going marriage. here and with there. scheduled Just hold caste. on, hold on. First, let's come to Ranjana case. Ranjan, I'll come. Ranjana case has discussed Jyoti, Yes, my lords. distinguished it, Yes, my lords. saying that Succession Act doesn't apply to Hindus. Yes, my lords. Right. Then they said right to caste is created on the date he or she is born. Yes, my lords. So Ranjana Kumari says that caste is by birth. On the day if she's... My lords, para number 10 if I may read. In Ranjana Kumari case which I have given of this Honorable High Court, DB bench. The right of a scheduled caste is created on the date he or she is born. Since the right is affixed with the birth of the person, the same is affixed with the state in which such right has accrued. Petitioner therefore as a member of scheduled caste community accrued rights applicable to members of scheduled caste communities of the state of Punjab on simultaneously with a birth in Punjab. The moment she migrated to the state of Uttarakhand, whereon being married or otherwise, which is the case here, my lords, she did not bring with her the right that she acquired the state of Punjab. So far as the state of Uttarakhand is concerned, she never acquired any such right. May I, Lordship? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ. And Jyoti Bala was distinguished in this matter in paragraph number 7 in Ranjana Kumar. This is a later judgment of after Jyoti Bala, my lords. Jyoti was first, Jyotsna was second. Yes, my lords. And in fact, this judgment was relied upon by in WPMS number 853 of 24, this Sunita Singh, my lords, in which again अभी the रुको ना, quarterly... रंजना कुमारी पढ़ रहे हैं आप, सुनीता सिंह भी चलेगी. रंजना कुमारी पढ़ रही नहीं, है. रंजना कुमारी का ही एक रेफरेंस है जो एक और रिट में है. मैं रंजना कुमारी... रंजना का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखता है ना. हाँ, रंजना कुमारी सुप्रीम कोर्ट, माय लॉर्ड्स. रंजना कुमारी वो मैंने लास्ट ओकेजन पे माय लॉर्ड्स को दिया. माय लॉर्ड्स हैव दैट कॉपी. 2-page जजमेंट. I'll start from para number 2, my lords. Para number... हमारे पास है ही नहीं, वो कहाँ की. एक my lord रंजना कुमारी. उससे लो. My lords, this matter travelled to the Supreme Court. Supreme Court in very short judgment has reiterated the facts in paragraph number 2. It says that the appellant who belongs to Valmiki caste of scheduled caste of the state of Punjab married a person belonging to Valmiki caste of Uttarakhand and migrated to that state. उसमें दोनों में notified था, my lords. But in the state of Uttarakhand, under the presidential order, Valmiki is also recognized as a notified scheduled caste. The state of Uttarakhand issued a certificate to the appellant. The appellant contended before the High Court that she was a scheduled caste of the state of Uttarakhand. The High Court, having rejected her claim, appellant is in appeal before us. 2 constitution bench judgments of Mary Chandrasekhar Rao versus Seth GS Medical College and Action Committee on Issues of Caste Certificate to SC/STs versus Union of India have taken the view that merely because in the migrant state the same caste is recognized as a scheduled caste, the migrant cannot be recognized as a scheduled caste of the migrant state. भले ही दोनों स्टेट्स में वो नोटिफाइड है, अगर वो माइग्रेट होते हैं किसी और स्टेट से टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, शी विल नॉट बी कंसिडर्ड. द इशुएंस ऑफ अ कास्ट सर्टिफिकेट बाय द स्टेट ऑफ... तो जो ज्योत्सना का लास्ट पैराग्राफ था Yes, Lordship. कि मैरिज के बाद वो माइग्रेट नहीं होती है, वो तो रंजना ने मना कर दी. Lordship, रंजना कुमारी जो जजमेंट आया 2011 by the Supreme Court when it was referred to the larger bench, but the larger bench decided it in the year 2018. 19 But- हाँ, 18. हाँ As far as I know. हाँ 18 ठीक है. But Lordship, even there, even at 2018, this particular judgment that is still valid before this honorable court and Which judgment? apologies Lordship, this government order that has never been challenged as far as I know, that of 2nd April 2013, it was never been dealt in that Ranjana Kumari judgment. However, it is the case of Uttarakhand and Lordship in our ये बात case, तो सही है. yes Lordship, Lordship, आपके स्टेट में एक जियो है जो उसको आप किसके लिए साहब? हमें इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है पिटिशनर से. हम वो 1350 स्टूडेंट हैं जिसमें इंटरिम ऑर्डर ऑपरेट कर रहे हैं. हमारा सिर्फ कहना यह है कि इनको साइंस की एक सीट चाहिए. तो अगर कमीशन अंडरटेक करे एक सीट कर दिया उन्होंने, तो कब पे कर दिया? वो तो कब शुरू से कह रहे हैं कि जितना ये सब्जी रोक दो, हमको छोड़ दो. हाँ, बस हम भी आज थोड़ी कह रहे हैं, हम भी तो शुरू से एजी एडवोकेट जनरल भी आके बोल के चले गए. यही कहना है हमारा.
जाएगी। हमारा इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब इनको मिलना है एक सीट इनको मिल जाए। हम तो हमारे तो सब्जेक्ट भी अलग हैं और कैंडिडेट भी अलग हैं। चलो सुन लिया भाई। My lords, I request Lordship, I may be granted 2 minutes, My Lordship. lords, if I और तो कोई बात नहीं, रंजना Lordship, just to counter them. रंजना में सारे दोनों जजमेंट हैं। हाँ, my lords, one more important fact, the judgment which has been given by my friend, my lords, Ajay Kumar one. My lords can kindly mark para 36 to 48 of that क्या judgment. है? मतलब उसमें सारे जियोस का रेफरेंस दिया है 2001 से लेके आज तक में. The entire judgment rotates around the fact that what is the definition of permanent residence. ठीक है। और वहाँ पे कहीं ये नहीं है तो कोई कि सब कास्ट ये सब सर्टिफिकेट बेकार माई की- ये क्या बोल रही हो मतलब- प्रियंका? मतलब एक आपका सेकंड। जो 2 अप्रैल 13 का जियो है वो जी, कहता है कास्ट सर्टिफिकेट परमानेंट रेजिडेंट को दिया जाएगा। और वही जियो ये भी कहता है कि अगर वो किसी और स्टेट में होंगे तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा. क्लॉज नंबर 7 ऑफ द नो, सेम 5 क्या है? मतलब 7 भी है. एक 5 बार 5 क्या है? आर्गुमेंट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, डोंट डू दैट। नहीं मतलब कैन हैव है वही है। 7 मतलब हां, जाति मैरिड मतलब 5 क्या है? मैंने 5 पढ़ी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नहीं। की दशा में यदि 5 नहीं, 5 माने 7 बोल रही हूँ. नहीं नहीं, हाँ. Lordship, पैरा 4 में पैरा permanent 4 में resident 5 क्या यस है ये दिया गया कि है। स्थायी निवासी की क्या डेफिनेशन होगी. ऐसी पत्नी भी सम्मिलित होंगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी की शादी करने के उपरांत अपने पति के साथ उत्तराखंड में रहती ठीक है. है। इसको एक बार पैरा नंबर क्लॉज 7 के साथ पढ़ेंगे. पढ़ो। जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय आवेदक द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जाएगा कि उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी अन्य राज्य में जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और न ही वह भविष्य में अन्य राज्य की जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा अथवा उसके परिवार किसी अन्य राज्य में उक्त जाति को अनुमान्य लाभ नहीं ले रहे हैं. अब ये फैक्ट माय लॉर्ड स्टेट डिटरमाइन करेगा, ये हम नहीं कर सकते हैं. और जो इन्होंने रिजॉइंडर पे लगाया है एक एफिडेविट, वो एफिडेविट इनका नहीं है माय लॉर्ड. दिस इज वी डोंट नो दैट व्हाट इज इफ दिस एफिडेविट वाज बीन सबमिटेड बाय हर एट द टाइम ऑफ टेकिंग हर कास्ट सर्टिफिकेट. My lords, she has to, because this is their case that she is Dhivar from state of UP. That particular caste is not even notified as per the understanding of the notification. क्योंकि कश्यप धीवर Lordship, होता kindly है allow me to Lordship, kindly allow me to get counter of a submission, Lordship. Lordship, kindly allow me to for 2 minutes, Lordship. Lordship, first of all, we are not here to prove that I may be granted caste certificate. I duly have the residence certificate as well as the caste certificate. That they have not disputed. They have just said that our caste certificate has the name of my husband, not of my father. Secondly, at the time झूठ of तो बोला ही आपने, असत्य तो बोला no, Lordship. आपने. क्यों नहीं? एप्लीकेशन फाइल करते हुए दिन आप लिखते हैं अविवाहित. Lordship, it was just a mistake, but पर even असत्य if है. Lordship, even if असत्य त्रुटि से है. even if I have been there unmarried, I have written unmarried. It is not going to affect the merit of the particular. बात ये नहीं है. आपने It was, Lordship, आपने it was क्योंकि not deliberate, Lordship. ये 2000% डेलिब्रेट है सर. क्यों? क्योंकि आपका सर्टिफिकेट आपकी पति का नाम, Lordship, और Pati, आपको फिर अनमैरिड नहीं लिखना चाहिए था. Lordship, it was just a mistake, Lordship, that I have rectified. And Lordship, secondly, at the time of filing of the writ petition, My lords, इसका Lordship, एक we were not reference- of the opinion why I am candidate, why my candidature was rejected. And Lordship, each and every judgment she had produced before this honorable court does not apply to us. First of all, that Ranjana Kumari, she had travelled from state of Punjab to state of Uttarakhand, whereas we are travelling from the state of Uttar Pradesh to Uttarakhand. And Lordship, secondly, the government order that I am relying upon, it has not been dealt in that Ranjana Kumari, that was delivered, that the judgment was delivered by the honorable Supreme Court. My lords can have Third this is your- document. इसमें ये लिखा है कि we can reject a candidature on the basis of a incorrect information. So grateful. Grateful.
kindly request your lordship to please pass the matter post lunch, as sir is engaged in court number 4 with the personal appearance matter, your lordship. मतलब ये डायरेक्शन मैटर में देखो सर, देखो this matter is listed under देखो इनकी प्रेजेंस